Hello guys, how are you? So now we are going to start the binominal nomenclature, means by named or binominal nomenclature. Earlier I had said about the nomenclature and taxonomy, classification and identification. Now once you identify some organisms, then you have to classify these organisms or plant or birds or etc. So now first you have to give the name to the organism or a plant or animal etc. So there are some rules which is originated by the organization of ICBN or ICZN and the scientist who gave the first binomial nomenclature, the Carolus Linnaeus. Now here are some examples. I will give you some examples of binomial nomenclature. First the mango, Mangifera indica, then rose, the Rosa indica, then lion, Panthera leo, then humans, Homo sapiens. So there are so many examples of binomial nomenclature. So now we move towards the rules of this binomial nomenclature. The first rule is this name must be written in the Latin language or written in Latin or Italic. Okay, so the name is must be is in Latin language because it is originate from Latin. That's why it is Latin language and Greek origin from Greek also. So that's why the names are in always in Latin language. Okay. Then second rule, it have the two names. Okay, so the first name indicates or represent the genus of their characteristic. Okay, so first name है वो genus indicate करता है and the second name is represent species. Okay, so it have two names. The first name represents the genus and second name represents the species. Okay, then what is the genus and what is the species of their respective animals? Okay, move to the further. The third is if you handwritten document, if you write the scientific name in your with your hand, so you must underline, you should underline to the scientific name. Okay, because it is ethically, because you have to write, this is the rule. And if you print or if you type any scientific name, so the name is must be italic. ओके, सो आपको वो जितना भी वर्ड है वो सिलेक्ट करके उसको इटैलिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन नॉट इन द नॉर्मल फॉन्ट. आप नॉर्मल फॉन्ट यूज नहीं कर सकते. यू हैव टू डू द इटैलिक वर्ड फॉर दिस नेम. ओके, यू हैव टू राइट, यू हैव टू टाइप. और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में इटैलिक चाहिए. एंड इफ यू रिटन डॉक्यूमेंट है, कोई हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, सो उसमें साइंटिफिक नेम लिखना है, तो यू हैव टू अंडरलाइन द नेम. ओके, then the last is the last rule is if you write any name, scientific name, so the first letter of that name is compulsory in capital. ओके, जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है, फॉर एन एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका, सो एम, मैंजीफेरा का जो एम है, सो एम इज कंपल्सरी. एम है वो कंपल्सरी कैपिटल होना चाहिए एंड नॉट द अदर वन. Rest of the name or rest of the letters should in the small letters. The first one is only capital, then the rest of the letters are in small letters compulsory. Okay, they are in compulsory in small letters. वो small होने चाहिए. The first name is the first letter is capital. The बाकी के जो है वो small होने चाहिए. Sometimes in the further classification, the genus and species after some names like Homo sapiens sapiens, so उसके बाद सब स्पीसीज भी आती है. तो कभी कभी उसका जो नाम है, उसके नेम के पीछे the subspecies is also there, like Panthera leo, Panthera leo persica, then Homo sapiens sapiens. Sapiens, another sapiens is a subspecies like Panthera leo. The second leo is a subspecies. Panthera leo persica is a subspecies. So some animals have their three nominal name or three names. Okay, so genus, species, and sometimes subspecies also. Then after the scientific name, there should be a letter, capital letter of the researcher or the founder of that species.
अगर कोई फाउंडर है और जिसने भी ये स्पीसीज है वो फाइंड की है या उसने भी इन्वेंट की है, इन्वेंट तो नहीं कर सकते, फाइंड की है, सो उसका जो नाम है वो पीछे लिखा होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल जिया मेज इज द नेम ऑफ मेज, मेज का जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है जिया मेज। जिया मेज, एल एल कैपिटल फॉर्म में होगा, एल मीन्स कैरोलस लीनियस, लीनियस का एल होगा। सो जो भी फाउंडर है स्पीसीज का उसका नाम का फर्स्ट लेटर है वो साइंटिफिक नेम के पीछे आएगा। कैरोलस लीनियस एल, लाइक होमो सेपियंस एल। सो एल इज द कैपिटल लेटर व्हिच इंडिकेट्स द फाउंडर्स इनिशियल लेटर है वो। ओके, सो दीज आर द रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेम। ओके, ये साइंटिफिक नेम जो भी लिखना है, बाइनोमिनल नेम है, उसके रूल्स है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस साइंटिफिक नेम, हम ये साइंटिफिक नेम को यूज करके या उसका यूजेस करके हम किसी भी एनिमल्स के बारे में जान सकते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जान सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो कि अगर हमें कोई एनिमल के बारे में जानना है, अगर वी जस्ट नो अबाउट दैट ग्रुप नेम, इफ वी talk about the mammals, you just imagine the characteristic of mammals. If I just take a name of cat, you just imagine the characteristic of cat and dog, and for an example birds हैं, कोई plant species है, so आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके कैरेक्टर्स क्या होंगे उनके सिर्फ ग्रुप के नाम पर से। आप ग्रुप के नाम पर से उनके पूरे कैरेक्टर्स को इमेजिन कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ओके, नाउ यू नो अबाउट द एनिमल्स, यू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल। नाउ यू जस्ट क्लासिफाई द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, हम मैमल्स के अंदर कैट को भी रखते हैं, डॉग को भी रखते हैं, मैमल्स के अंदर हम व्हेल को भी रखते हैं, देन बैट को भी रखते हैं, ह्यूमंस को भी रखते हैं, एप को भी रखते हैं। सो दीज ऑल आर मैमल्स, but according to their different characters. For an example, dogs have different characters, cat have different characters, humans have different characters. Okay, so you classify according to their characters. For an example, carnivora included the all cats. So cats and dogs है वो carnivora के अंदर आते हैं। Okay, जो उसकी अलग अलग स्टेप है। फॉर एन एग्जाम्पल, वी ऑल आर यूकैरियोटिक सेल्स, वी ऑल हैव यूकैरियोटिक सेल्स। सो सबसे पहले हम यूकैरियोटा में आते हैं। देन यूकैरियोटा के अंदर यूनिसेल्युलर भी है, मल्टीसेल्युलर भी है। सो मल्टीसेल्युलर जो एक से ज्यादा जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर उनका एक ग्रुप है जिसमें भी हम आते हैं। देन जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, डिसिमिलरिटीज बढ़ती जाती है, हम धीरे धीरे एक एक स्टेप में क्लासीफाई होते हैं। This type of classification is called, this stage of classification is called taxa. हम उसको taxa बोल सकते हैं। ओके, हम different animal character के according we just classify the animals in the taxa. Taxa means a group, a particular group जिसके अंदर हम animal को रखते हैं, वो यहाँ classify करते हैं। Okay, so there are the tags, so many taxas according to the classification, according to their character, according to their dissimilarities. So there are taxa, and this taxa, the study of this taxa is called taxonomy, और इट्स कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। इसको सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं, टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं कि टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स। व्हाई इट्स कॉल्ड सिस्टमैटिक? बिकॉज इट इज द सिस्टम which is important, which is based on the important characteristic and according to their complexity and simplicity. If you start from the basal part and you going to the upper part, the complexity is decreased and simplicity is increased. Means the similar characters are increased, but when you come from upper side to lower side, the kingdom, then the subkingdom, then the phylum, then the class, then order, then family, then genus and species and subspecies. There are so many taxas are there. Okay, sorry, so many taxas. So these taxas are systematic. They are एक सिस्टम में पूरी फॉलो करता है, दैट्स इट्स कॉल्ड सिस्टमेटिक्स, और टैक्सोनॉमी को सिस्टमेटिक्स भी बोलते हैं। सो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में या आगे भी जब स्टडी करेंगे, सो वी जस्ट मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन, हाउ द एनिमल्स आर क्लासिफाइड, उसको कैसे अलग अलग टैक्सा में डालते हैं, और डिफरेंट टैक्सा के बारे में, इस टैक्सा में हमने क्यों एनिमल को रखा है, नेक्स्ट टैक्सा में क्यों रखा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज यहाँ तक रखता हूँ। ओके।